This call is now being recorded. Hello. So, Assalamu alaikum and good morning, everyone. I hope I'm audible and my screen is also visible. Okay, thank you. Okay, so let us continue with the same chapter, that is chapter number 2. Okay, and I think yes, your chapter 2 will be there in the UT. Your UTs are going to be conducted in the first week of March, maybe in first week or second week, not sure, but the date will be released soon in March, in the second week, maybe in the second week of the March, your UT1 will be conducted. Okay, so in the same manner, what we have conducted in the last session, in the last semester, so we'll be conducting the UTs in the same way. Hopefully, until unless the process will get changed by higher authorities. So we are waiting from those. Okay, so this chapter we will be covering this particular chapter, okay, and then these two chapters will be there in the first unit. Okay. So let us start what we have done yesterday. I think yesterday we had taken one topic which was from the chapter number 1. Okay, if you remember, then we had covered only one topic yesterday. The topic क्या था किसी को याद है वो? It was from the first chapter. It was from first chapter. So interaction के regarding कुछ था paradigms. Okay, so these were it was a topic what we have covered yesterday, that is paradigm. Paradigm is basically the different way from which your interaction can be done. Okay, and the different we can say different methods also paradigm. So it's a reference, a frame of reference or the theory. But इसकी theory तो बहुत कुछ होती है, बट हम लोग ने इसको थोड़ा सा इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. इट्स नॉट एग्जांपल, these are the types of paradigms, different kinds of paradigms. So these different kinds of paradigm, from these particular types we understood what is basically the paradigm. So one was win-win, then win-lose, lose-win, lose-lose, win, and voting. So these were the topic we had covered yesterday. Now let us go to the topic. Chapter number 2. Chapter number 2. Okay, so in chapter number 2, we have already started this one. That is what is design basically. So this is achieving goals within the constraint. Whatever requirement are given, or whatever requirements are given. So within the requirement, we have to achieve the goal. Okay, so this is basically we have seen the simple definition of design. Okay, then afterward, these are the simple goals we have mentioned. What is the purpose of the design? Okay, we are intended to produce. Okay, and then who is it for? Okay, basically this design will be for which kind of people. Then why do they want it? What is the purpose behind it? Then, for example, if you are designing anything, okay, if you are designing any watch, okay, if you're designing any watch, then you have to answer all the question what they are asking. Okay, what is the purpose of the design? What is the purpose of that particular machine, so that people will wear it, it's the wristwatch. Okay, so you know the purpose why we want this one. Who is it for? So basically this is you can categorize for men, women, unisex. Okay, so no number of categories can be made. Then why do they want it? Okay, so basically to see the time. Okay, so आगे की कहानी आप लोग को बताएं. So these are the basic rules. Okay, and even more questions can be formed and more questions can be answered. That if you are making any design, if you are making any model, if you are making any software, then
lot of questions can be answered with the help of these tools. Then these are the different constraints. Okay, so we had already covered. Then obviously whatever requirements were given, so according to those requirements, if we are not fulfilling those requirements, then it's okay, not a big deal. We cannot always achieve all the goals which are given. We cannot achieve all the requirements which are given, but at least the major requirement has to be fulfilled. But if we are not fulfilling the quite small requirement which are not that much important, but still we need to cover it. Okay, so if we are ignoring the small constraint, if we are ignoring the small goals, then we must achieve the big goals. Okay, so that we can say that these things are achieved, these goals are achieved, these constraints are fulfilled. Okay, so not need to worry about it. Okay, so this is called the ट्रेड ऑफ, कुछ को छोड़ना, और इन्हें बोलते हैं ना, कुछ हम लोग ने एक वर्ड यूज किया था उस दिन, मांडवली. ओके, so बोलते हैं ना हम लोग आपस में, समझ के लेना. So few constraints are released and few constraints are fulfilled. So we can do so. So this is called the trade-off. These are the general mistakes while designing any computer system. So these are the general mistakes we will see. The golden rule of design. Okay, so the golden rule still say that understand your material, understand your component. Okay, understand your element. Okay, so basically for this example, that is for steel chair or wooden chair, you can easily compare that which is the best one or which one you can make. Okay, because we are not having that much information about the steel chair and wooden chair, but still we have already seen कि स्टील चेयर जो होती है वो भी काफी स्ट्रांग होती है, वुडन चेयर काफी वो भी अच्छी स्ट्रांग होती है ना. तो उसके अंदर आप कंपैरिजन, उसको उसको जो जानने वाला है वो उसका कंपैरिजन अच्छे से कर सकता है. वी कैन नॉट डू सो. So we need to understand the material. तो यहाँ पर example के लिए understand the material. We need to understand the components. We need to understand the elements which are there in the product. Okay. So if we are making a software, then we must understand the different component, different modules of the project of the software. Okay, where obviously your software will be divided into a number of modules, and those modules you need to understand it properly. Okay, so for each and every domain, the material will be different basically. Okay, and this is we and that is we must understand the computers and we must understand the people. Okay, the two parties we were talking about, so those two parties must be understood properly. Okay, so here we were talking about the designing of computer system. Okay, so then we need to understand the computer and who are going to use this particular computer, the peoples or the stakeholders or the users are going to use this particular computer. तो अगर वो यूज करने वाले हैं तो फिर दूसरी दूसरी पार्टी कौन हुई आपकी, पीपल्स यूजर, दीज आर दी सेकंड पार्टी. सो ये दो लोग इंटरेक्ट करने वाले हैं, तो दोनों को अंडरस्टैंड, इन शॉर्ट the parties which are involved in the interaction, the two parties which are involved in the interaction, so ये दोनों पार्टी को समझना बहुत जरूरी है. दिस इज द गोल्डन रूल वी कैन से, कि दोनों को समझेंगे तभी जाकर आपका इंटरेक्शन सक्सेसफुल हो पाएगा, यानी तभी जाकर आप एक अच्छा डिजाइन बना पाएंगे. We all are talking about, I'm just talking about all these things, for the designing of a good process, for the designing of a good product. Okay, तो जब तक हम इनको समझेंगे नहीं, जब तक हम इनकी समझेंगे नहीं, तब तक we cannot design a good product. Okay, and in order to design a good product, we must understand the computer and the people or the user or the stakeholder who are involved and going to perform the interaction with the computer. Okay, so basically we need to understand both the parties. Simple, एक line के understand the computer, understand people in this case. Okay, so for example, जैसे मैंने आपको बताया कि if there is a carpenter who is making some chair. Okay, one chair. Okay, wooden chair वो अगर बनाने वाला है, then you need to understand first the material. ठीक है, कि कौन सा मटेरियल उसको यूज करना है. तो वो बोलेगा कि मतलब के बहुत सारे अलग अलग होते हैं, अलग अलग वुड मतलब के उसकी लकड़ी के बनते हैं. तो जो सबसे बेस्ट वाली रहेंगी, अगर वो उसको अगर कभी चूज करेगा, तो उसकी जो चेयर है तो वो ज्यादा महंगी. आपने देखा होगा सागवान के, दीज काइंड ऑफ
trees are having good जो इनके रूट्स होते हैं वो बहुत अच्छी होती है, और इनके इससे जो फर्नीचर बनता है वो बहुत अच्छा फर्नीचर होता है, काफी महंगा भी आता है। इवन अगर कभी आप दो चीजों को कंपेयर करेंगे, एक सादी लकड़ी का बनी हुई चेयर है या टेबल है, सो इट कॉस्ट यू अराउंड फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज, ओके। बट वही सेम चेयर अगर आप कभी अच्छे लकड़ी का लेने जाएंगे, सो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 5000 रुपीज, ठीक। सो ये डिफरेंस होता है बेसिकली बहुत ज्यादा, 3-4 के 3-4 टाइम्स का डिफरेंस आ जाता है। So this is just an example for to understand you people. Okay. So the basic thing is that the interaction. If you want a good interaction, then you must have a good design. And in order to have a good design, you must need to understand both the parties clearly or uh, properly. Okay. So ये था हमारा लास्ट का, ठीक है। So the next topic is regarding human interaction with the computer. These are very general topic, okay। अगर मैं आपको ये नहीं भी पढ़ाऊँ ना तो भी आप लोग आराम से कर सकते हो, बट स्टिल एज अ पार्ट ऑन एज अ सिलेबस जो इसके अंदर है हमारे, तो वी आर लर्निंग एंड वी आर जस्ट गोइंग थ्रू के थोड़ा थोड़ा पॉइंट हमारे डिस्कस भी हो जाएंगे, एंड इट विल हेल्प यू व्हाइल यू विल मेक स्टडी, ओके। ओके, so today we are going to learn about the human interaction with the computer, and the second topic is human characteristics in design, okay। What are the different human characteristics, human के अंदर क्या क्या खूबी है जो कि डिजाइन में काम आने वाली है, ठीक है। तो इन चीजों को हम लोग ने मेंशन किया, लाइक परसेप्शन, द फर्स्ट इज परसेप्शन, देन सेकंड इज मेमोरी, देन थर्ड इज सेंसरी स्टोरेज, नंबर 4 visual acuity, number 5 foveal and peripheral vision, number 5, number 6 information processing, number 7 learning, number 8 mental models, number 9 movement control, number number 10 individual difference. So these are the 10 characteristics they have mentioned in the design, ठीक है। मतलब डिजाइन में सारी चीजें काम आती है, ठीक है। मतलब इंसान के पास में ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स ये सारी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो आपका डिजाइन क्या होगा, आपका डिजाइन अच्छा बनेगा, कहने का उनका पर्पस यही है, ओके। Okay, the first one, that is human interaction with the computer. This is not the first one, this is the separate topic. Human interaction with the computer. Human interaction, एकदम जनरल टॉपिक, एकदम जनरल टॉपिक, कुछ नहीं इसके अंदर। यू कैन इजीली, अगर मैं आपको बोलूँ कि इंटरेक्शन विद द कंप्यूटर, ह्यूमन और कंप्यूटर का इंटरेक्शन लिखो तो आप लोग एक पेज आराम से लिख सकते हैं इजीली बाय जस्ट रीडिंग दिस पर्टिकुलर स्लाइड। The way of human interacting with the computer is always being a evolving process, okay। ना आपको पता है कि पहले you were having mechanical computers, अगर आपको याद होगा तो if you have seen the generation of computers, then you might have heard about the mechanical computers which consist of a room or a hall, okay। इतने बड़े बड़े computers हुआ करते थे। So in those computer system you used to give, आप आपने तो नहीं दिया होगा, but you have heard about it that के just giving the input by means of the punch card, okay। आपको 2 इनपुट देना है और 3 इनपुट देना है, 2+3 आपको करना है, सो यू हैव टू गिव 2 and 3, ओके, एज अ पंच कार्ड इनपुट, ओके। और फिर उसको आप सेंड करोगे, फिर वो मशीन में कुछ तो कैलकुलेशन होगा, कुछ तो मैकेनिकली परफॉर्म होगा, और लास्ट में आपको आउटपुट मिलेगा। So एक mechanical computer. So it was the one era. Okay, it was the early era, the first era where the computer was. Okay, and at that particular time, just try to understand what I want to say. अगर आप लोग समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, so you can easily write down the answer. आपको कहीं देखने की भी जरूरत नहीं, एक बार दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं। I'm sure about it. Okay. So in the early stage of computing, we were having mechanical computers, and the human used to interact with that particular with that particular mechanical computer with lot of times. Okay, first time he used to do some cleaning part, बाद में फिर थोड़ा सा punch काट के input दिया, फिर बाद में कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे कर करके just in order to perform this that 2+3 is equal to 5, तो 2+3 करने के लिए उसको कितना टाइम लग जाता है, ठीक है। एंड many time human has to interact with that particular mechanical computer। आज क्या है, सिंपल। आज सिंपल, अगर आपने खाली बस बोल भी दिया 2+3, so you are having such a system that will take the input as 2+3 and will give the output as 5, okay।
So now just look at the evolution, how the evolution has taken place. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एक मैकेनिकल कंप्यूटर, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट में बताया, फर्स्ट सेकंड पॉइंट में, after introduction of the graphical system, there was the need of something more than the keyboard to interact with the computer. ठीक है, थोड़ा स्पेस बढ़ा बढ़ा बढ़ा, और बढ़ने के बाद में फिर हम लोग को कीबोर्ड के थ्रू इनपुट देना पड़ा। ठीक है, कीबोर्ड के थ्रू इनपुट गया। उसके बाद में वी आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ ग्राफिकल सिस्टम। उसके बाद में हमारा कुछ डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, तो डॉस में आपका माउस नहीं चलता है। ठीक है, तो बेसिकली यू यूज टू हैव इंटरेक्शन विद दिस पर्टिकुलर कंप्यूटर बाय मींस ऑफ गिविंग द कमांड्स एंड ऑल दैट। ठीक है, सो आपका कीबोर्ड काम में आ गया, कीबोर्ड आ गया। ओके, एंड आफ्टर दैट वी रिक्वायर्ड नाउ फ्रॉम आई थिंक Windows 95, Windows 98, so we got some graphical system. Okay, so that graphical system need we need some mouse. Okay, so एक new आपका डिवाइस आया जिसको हम लोग माउस बोलते हैं, तो माउस के थ्रू हम लोग फिर उसको यूज करते हैं। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमन टू इंटरैक्ट विद कंप्यूटर आर टच स्क्रीन नाउ। ठीक है, अब माउस को भी हम लोग ने हटा दिया, बिकॉज वी आर हैविंग लॉट ऑफ लैपटॉप्स, ओके, व्हिच कैन रोटेट 360 डिग्री, and you don't require the keyboard and mouse. You just have to use it using the touch screen. ठीक है, तो टच स्क्रीन की तरह आप पूरा उसको यूज कर सकते हैं। सो और उसके आगे का, आगे भी लिखा है, टच स्क्रीन enables the user to interact directly with what is displayed. Whatever is there, you can interact with that particular system directly without the use of mouse and keyboard. Mouse और keyboard वगैरह तो आप लोग यूज कर लेंगे, rather than using the mouse, touchpad, or any other intermediate device. See the evolution. So this is how the human interaction is happening from the mechanical computer to the touch screen or the gesture system. Okay. Now last wala ek baar dekh lo. Nowadays, by using gesture of human action, the interaction with computer is done. Okay. So you have a smart device in front of you. Okay. And you are just doing some sort of exercise. Okay. You are just doing some exercise. Okay. So you are doing something, अब मुझे तो उसके मूव्स पता नहीं कैसे कैसे मूव्स होते हैं, उसके मूव्स को क्या बोलते हैं, बट यू जस्ट मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, जिसके अंदर कुछ तो ऐसा करना है। इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, देन द सिस्टम इज सो स्मार्ट दैट इट विल टेल यू, ओके मिस्टर मुख्तार, यू आर डूइंग दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। ओके, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उसको ऐसे ऐसे करना है, जस्ट लाइक दैट। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। So the people, the devices are so smart, so they can easily interact with us. Okay, and we can easily interact. मिस्टर जो भी आपके असिस्टेंट है, गूगल असिस्टेंट या जो भी असिस्टेंट, आप उसको बोलोगे कि हाउ टू डू दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, ओके, तो वो आपको बताएगा करके, उसका वीडियो करके बताएगा। जस्ट यू कैन इंटरेक्ट विदाउट यूजिंग अ कीबोर्ड एंड माउस एंड विदाउट टचिंग द स्क्रीन। यू कैन जस्ट हैव अ इंटरेक्शन विद द सिस्टम। तो द इवोल्यूशन, एक टाइम ये था कि जहां पर आपके पास मैकेनिकल कंप्यूटर था एंड यू हैव टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम इन अ लॉट ऑफ टाइम। उसके बाद में फिर हमारा एक डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, फॉर एग्जांपल। ठीक है, सो वी वर हैविंग अ रिक्वायरमेंट ऑफ कीबोर्ड, तो कीबोर्ड के थ्रू हम लोगों ने इसको ऑपरेट करना चाहिए। आफ्टर दैट वी वन मोर रिक्वायरमेंट केम एंड इट वाज माउस। ठीक है, माउस से हम लोग ग्राफिकल सिस्टम के अंदर यूज करते हैं। उसके बाद में फिर हमारे पास में टच स्क्रीन फोन आया, सॉरी टच स्क्रीन लैपटॉप्स एंड डिवाइसेस आए। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ टच स्क्रीन कीबोर्ड एंड माउस का काम निकल गया। उसके बाद में वी हैव स्मार्ट डिवाइसेस इन विच हमारा टच स्क्रीन का भी काम है। सी द इवोल्यूशन 1 2 3 4 5। सो इवोल्यूशन ऐसे, so this is it says all about the human interaction with the computer, मैकेनिकल कंप्यूटर, डॉस कंप्यूटर। उसके बाद में फिर यूजिंग आपका, उसका फिर सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज कंप्यूटर, फोर्थ स्टेज एंड फिफ्थ स्टेज कंप्यूटर। सो हाउ द इंटरेक्शन वाज देयर। ओके, so you need to write about the how interaction was performed in the early stage of computing, then later stage, then later. Okay, the how the interaction was done. Okay, this is all this particular slide says. Okay, आई होप आपको ये समझा होगा, जिसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल जस्ट खाली एक इंट्रोडक्शन पार्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिजाइन। मैं इस टॉपिक को ज्यादा डीप में नहीं लेने वाला था, लेकिन फिर भी आई एडेड ऑल द पॉइंट्स जो जो मुझे मिला, तो मैंने सारे पॉइंट्स ले लिया हूँ। तो सारे के सारे 10 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने इसमें डाल दिया हूँ विच इज रिक्वायर्ड फॉर डिजाइन। ओके, so we are learning about the design only, the first part. Let me show you first. This is the
design and software process. The chapter has been divided into two sections. One is the design, second is the software process. Okay, so हम लोगों ने first point देखा mistakes performed while designing a computer system. ये हम लोगों ने first में देखा था. Then human interaction with the computer. Second point अभी देखा. Then third, importance of human characteristics, human consideration. Okay, so human characteristics which are needed for the design process, वो हम लोग भी देखने वाले हैं. The third point. Okay, so हम लोग point by point जाएंगे. Human characteristics in design. So first, already I've shown you all the characteristics of the human, like perception, memory, sensory storage, visual acuity, foveal and peripheral vision, information processing, learning, mental model, movement control, skill, individual differences. All these are the different characteristics of a human which is required for designing purpose. Okay. So, chalo, let us start with the first one, that is perception. Okay, what is about the perception? Perception बोलते ना, मेरा perception ये था कि ऐसा शायद हुआ रहेगा, लेकिन नहीं. मेरा perception ऐसा था कि ये इस तरीके से करते हैं. तो आपका क्या होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, आपका अवेयरनेस होता है रिगार्डिंग एनी प्रोडक्ट, रिगार्डिंग एनी एलिमेंट. ठीक है. सो मेरा परसेप्शन ये है कि आई थिंक ये इसको अगर एक हथौड़ी मारेंगे तो खुलेगा. So this is my perception. I'm just giving an example. Not I'm going to do it the same way because it's person. So हर किसी का एक अवेयरनेस होता है. ठीक है. एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक इमेजिनेशन होता है. That we call it in the simple way, in the simple word we call it as a perception. Okay. So perception is our awareness and understanding of the elements and objects of our environment. Environment में क्या क्या चीज है. ये मेरा माउस है, मेरा पाउच है, ये मेरा केस है. Okay, this is my key. Okay, so everything whatever is there in my environment, तो उसके बारे में मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है, that is nothing but the perception. So ये human characteristics होना चाहिए कि you must have a good perception of all the elements which are present in around you, so that you can make use of all these awareness, make use of all this understanding while you are designing any product or any product. Okay. Perception is done through the physical sensation of our various senses, including sight, sound, smell, and so on. So perception is influenced in part by experience. आपने इसको हाथ में लिए, ठीक है, क्या यूज हुआ इसके अंदर, टच यूज हुआ ना, देखो, इंक्लूडिंग साइट, साउंड, स्मेल एंड सो फॉर्थ. हम लोग ने आई थिंक 5 सेंसेस देखे थे. तो ये हमारा जो है ना टच का है. उन्होंने इसको टच किया तो पता चला कि हाँ दिस इज मेड ऑफ द प्लास्टिक वन. ठीक है. सो वन थिंग, वन परसेप्शन इज देयर इन योर माइंड राइट नाउ कि इफ आई जस्ट वांट टू मेक एनी एयरपोर्ट केस और कुछ इस तरह का अगर प्रोडक्ट अगर आप लोग बनाएंगे तो यू कैन मेक यूज ऑफ द प्लास्टिक मटेरियल. ठीक है. तो एक आ गया परसेप्शन. और ये परसेप्शन कहाँ से है आपको, आपने अपने सराउंडिंग की एलिमेंट्स को देखा. ठीक है. आपने देखा कि अगर मैं सनग्लासेस का अगर पाउच बना रहा हूँ, सो आई कैन मेक यूज ऑफ दिस रेक्सिन मटेरियल. ठीक है. दिस इज द रेक्सिन मटेरियल. ओके. सो आई कैन मेक यूज ऑफ दिस रेक्सिन मटेरियल इन ऑर्डर टू मेक द pouches of sunglasses, to make the pouches of small pouches. अगर आपको बनाना है, so I can make use of this particular material. So this perception is now there. Okay. So this is how the human, this is the perception of taking the inputs from the environment on. Okay. So this is the one. Some perceptual characteristics include the following, like proximity. Our eyes and mind see object as belonging together if they are near each other in the space. क्या बोल रहे हैं, क्या बोल बेसिकली प्रॉक्सिमिटी. आपका तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपको पता है. बेसिकली हमारे आईज, अगर कभी अगर हमारी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे उसके रिगार्ड्स में, तो आर आईज एंड माइंड सी ऑब्जेक्ट एज बिलोंगिंग टुगेदर. ठीक है. तो बहरहाल हमारा जैसे ही whenever we see any product or anything from our eyes, okay, तो उसका कनेक्शन हमारा डायरेक्टली कहाँ से है, हमारे माइंड से कंट्रोल. ठीक है. तो बेसिकली जैसे ही हम लोग इस चीज को देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर एनवायरमेंट से रिसीव किया, परसीव किया, मैंने एनवायरमेंट से परसीव किया, इसको मैंने हाथ लगाया, तो दिस इज अ पाउच. ओके. इट इज मेड अप ऑफ रेक्सिन. तो फॉरन ये मेरे माइंड ने क्या किया, ओ द प्रोडक्ट व्हिच आई एम मेकिंग, so I can make use of this particular resin. I can make use of this particular material. Okay. तो मेरे माइंड ने फौरन इसको क्या किया, मैप किया, और इसको क्या किया, कोरिलेट किया कि हाँ दिस इज द सेम मटेरियल आई एम यूजिंग.
या फिर आई कैन मेक यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर मटेरियल। सो फॉरन हमारा जो है ना, तो हमारी आईज वैसे ही हमारे हमारे जैसे मैंने इसको टच किया, so this is made of the plastic. Okay, it's a plastic. I can use this plastic to make any other product also. So all these senses from which we interact with other elements which are present in my surrounding, I can use it. Okay, so I can. One is the proximity, second is similarity. Our eyes and mind see objects as belonging together if they share a common visual property, similarity. तो जो अगर कुछ हमने कुछ चीज में सिमिलैरिटी दिखेंगी, तो वो चीज को भी हम लोग क्या करेंगे, सिमिलैरिटी से कंसिडर करेंगे। देन मैचिंग पैटर्न, वी रिस्पॉन्ड सिमिलैरिटी टू द सेम शेप इन डिफरेंट साइजेस। ये सब हमारा दिमाग में चलता है, बेसिकली इसको थोड़ा सा मैंने वर्डिंग से एक्सप्रेस किया। यूनिटी एंड कंटिन्यूटी, इस इतना लिखने जाना नहीं था हमको, लेकिन फिर मैंने जो पॉइंट्स थे मैंने मेंशन कर दिए। तो वन इज द परसेप्शन, first human characteristic. This is the first human characteristics. ठीक है, नंबर लिख के रखता हूँ, जो मुझे कॉल आ रहा है, एक सेकेंड ना। +180785555 एक सेकेंड ना, ऑन्टारियो। और मैं जब भी कॉल उठाया मैंने, तो वहाँ कोई अलग ही बात करते रहता है कोई, तो आपस में, और बात ही नहीं होती। शो पता नहीं क्या है शो, बाद में देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, मुझे आसपास छोड़ना पड़ेगा। Okay, it was the first characteristics that we have seen, that is perception. Perception, we have a good idea about the perception. That is basically no awareness or understanding about the elements or objects which are there in your surrounding, in your environment. Okay, that's a very simple definition. Second is memory. We had a discussion about the memory, that memory में हमारा long term memory, short term memory, long term memory, and how the things comes in the short term memory. मैंने आपको ये भी बताया था how the things come and how the input is being taken from the in the short term memory. Short term memory में आती कैसे है? Short term memory में आती ऐसे है कि you take input from your 5 senses. Okay, उसमें से 2 senses तो उतना काम नहीं करते, but 3 senses से हम लोग input लेते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने माउस आपने पाउच लिया, ठीक है, सो यू हैव मेक यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर पाउच। ये पाउच लेने के बाद में आपके माइंड में आ गया कि द पाउच which I have used, so it was having one kind of chain. Okay, it was having one kind of chain, ठीक है, और ये चेन जो है ना, तो ये ऐसे स्लाइड करने पर खुलती है। ठीक है, सो इट कम्स इनटू द शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, मैंने एक टाइम यूज किया, आफ्टर नंबर ऑफ टाइम, आफ्टर नंबर ऑफ रिपीटेशन। एक सेकंड, हेलो, चैनल नहीं ये, हाँ सर बोलिए। Sorry for disturb. Okay, so we were talking about the memory, and if we talk about the memory, then we have two types of memory. One is the short-term memory, and the second is the long-term memory.
Okay, and in short-term memory, we are getting lot of inputs from the environment only, not from the environment. From environment, we take the input from by means of our sensors. Like we touch anything, we see anything, we hear something, we hear some sound. Okay, like that. So the input is coming from those sensors. Okay, and if the same action is repeated for a number of time, if the same action is repeated for a number of time, then what happens? After repetition, it goes to the long term memory. Okay, as I've given you one example, that this is the pouch. Okay, I saw this particular pouch. I don't know how to open this particular pouch, but when I see this pouch, so I used it and I opened this pouch in this way. Okay, so I got the idea that okay, we can open the pouch in this way. Okay, तो ये एक बार किया मैंने शॉर्ट टर्म मेमोरी में, फिर मैं भूल गया अभी 1 साल 2 साल के बाद में वापस से मेरे पास में ये पाउच आया. आई डू नॉट रिमेम्बर कि उसको मैंने कैसे ओपन किया था. ठीक है, बिकॉज वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आया, एक बार आया, थोड़ी देर के लिए रहा, फिर चला गया, और अब मैं उसको नहीं, अब मुझे उसको नहीं मालूम. बिकॉज वो तो हम लोग को पता है कि इसको हम लोग ओपन कर लेंगे, बट आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल. ओके, वी कैन कंसीडर दिस एग्जांपल कि आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर और 5 ईयर्स, ओके, अब वो चीज मेरे मतलब कि वापस मैं देखूंगा, अरे हाउ टू ओपन दिस. हाँ, एक बार आई थी मेरे पास में, बट आई डोंट नो हाउ टू ओपन. ओके, अगर ये चीज, अगर कभी यही काम आपने रिपीटेशन में कर लिया होता, बार बार ओपन किया, बार बार क्लोज किया, बार बार ओपन, एक बार दो बार, 1 दिन 2 दिन 4 दिन अगर आपने किया, रिपीटेशन हो गया, तो इट विल गो टू दी लॉन्ग टर्म. ये आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी का पिक्चर. सो ह्यूमन memories are ability to encode, store, retain, and subsequently recall the information and past experience in the human brain. That's a very good definition we can have for the memory, because with the because this element, that is memory, this is this is one of the characteristics which everyone, हर एक के पास तो दिमाग रहता है और मेमोरी भी होती है, तो ये एक important characteristics है जो कि डिजाइनिंग के लिए important. Okay, if you are having a good design memory, if you are having good memory, and you have lot of ideas in your mind, you have lot of design in your mind, you have lot of prototypes in your mind, then you can make a good design, then you can make a good product and good model, and in that result what will happen, your product will be successful. Okay, so इसके लिए भी characteristics important है. And there are 3 stages of memory, and they are sensory memory, short term memory, and long term memory. तो सेंसरी मेमोरी बेसिकली, द सेंसरी मेमोरी मतलब आप अपने सेंस से, अपने अपने जो 5 सेंसेस है उससे जो इनपुट लेते हो, इट कम्स टू दैट पर्टिकुलर वन, देन इट गोस टू द शॉर्ट टर्म मेमोरी, देन आफ्टर सो मच रिपीटेशन इट गोस टू द लॉन्ग टर्म. सेंसरी मेमोरी इज अल्ट्रा शॉर्ट टर्म मेमोरी व्हिच डिकेड्स और डिग्रेड वेरी क्विकली, नियरली इन 200 to 500 मिलीसेकंड. बहुत डीप में बताया. चाय का कप है, आपने पकड़ा, जैसे फौरन हाथ से छोड़ दिया, ओके, बहुत गर्म, तो आपने सेंस किया एक चीज, ठीक है, और छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद में it will retain for 2 or 3 seconds. The feel will retain or will remain for 2 or 3 seconds. थोड़ा आपने जैसे पकड़ा और फिर छोड़ दिया, ठीक है, आया दिमाग में, चला गया. ठीक है, अब वो चीज आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में कि मैंने चाय का कप पकड़ा था, वो भी गरम गरम था, इसके लिए मुझे थोड़ा सा हीट फील हुई थी. ठीक है, तो आपने वो ले लिया. Short term memory holds small amount of data, typically around 7 times or less in mind for a short period, for typically 10 to 15 seconds. ये एक सर्वे है, ये एक वैल्यूज है जो कि आफ्टर after survey, or we can say after study, they have got this information. This is for sensory memory. ठीक है, sensory memory, this is for short term memory, and this is about the long term memory. So long term memory contains the knowledge we possesses. Then last may information received in short term memory is transferred to it and encoded within it and processed, we call learning. So after so much of repetition we learn the things के भाई इस pouch को यहाँ से ऐसे open करना होता है. So after so much of learning, with the information goes to the long term memory. ठीक है भाई, बहुत थियरी है और बहुत मतलब सिंपल है, कुछ ज्यादा इसके अंदर आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद में अगर रखेंगे देन आप आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं. ठीक है, सो दिस अबाउट द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द, ओके, व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर डिजाइन. ओके,
वी हैव सेंसरी स्टोरेज, जैसे अब सेंसरी मेमोरी थी, उसके बाद में शॉर्ट टर्म मेमोरी थी, एंड आफ्टर दैट वी आर हैविंग लॉन्ग टर्म मेमोरी. सो इन द सेम वे वी आर हैविंग सेंसरी स्टोरेज आल्सो. Sensory storage is the offer where the automatic processing of information collected from our senses takes place. मैंने आपको जैसे बताया, चाय का कप था, तो आपने अपने अपने हाथ से आपने जैसे ही पकड़ा, तो आपका सेंस, आपके जो, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, आपकी उंगलियों में जो सेंस था, तो उसने उसको फील किया कि दिस पर्टिकुलर कप इज हॉट. ओके. एंड तो जैसे ही उसने इसको पकड़ा, तो वैसे ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई, डेटा कलेक्ट हुआ, और जाके बफर में सेव हुआ. कौन से बफर में? सेंसरी स्टोरेज के बफर में जाके सेव हुआ. अरे ये तो गर्म है. सेंसरी स्टोरेज बेसिकली डिपेंड्स ऑन सेंसरी मेमोरी. ठीक है. तो सेंसरी स्टोरेज मतलब हमारा, जो हम लोग अभी यहाँ से लिए फॉर एग्जांपल, तो मैंने इसको पकड़ा कि दिस इज क्वाइट बल्कि, दिस इज क्वाइट, मतलब जिसका वेट इज क्वाइट वेटेड. ठीक है. इसका जो वेट है वो काफी ज्यादा है, तो इसको मैंने जैसे ही उठाया, तो मैंने इसको वेट, अरे तो काफी वेटेड है. तो जैसे ही मेरे हाथ ने इसको फील किया कि वेटेड है, मेरे सेंसरी स्टोरेज में इंफॉर्मेशन जाके स्टोर हुई थोड़ी देर के लिए कि हाँ दिस इज क्वाइट वेटेड, नीचे मैंने रख दिया. अब उसके बाद में दूसरी दूसरी मेमोरी है, ये मेमोरी चलेगी. तो सेंसरी मेमोरी क्या है? बेसिकली सेंसरी स्टोरेज इज द बफर where the automatic processing of information collected from our senses, collected what we see, what we hear, we feel, what we sense. ओके, तो ये सारे सेंसरी सेंसर से जो हमको इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है सेंसरी स्टोरेज में. सिंपल. आज के लिए जो लास्ट वाला हम लोग देख लेते हैं, विजुअल एक्यूटी. ये पढ़ने की बजाय मैं आपको जस्ट खाली ये बोलूंगा पहले. चलो एक बार पढ़ लेते हैं. आपका VA, दैट इज विजुअल एक्यूटी, कॉमनली रिफर्स टू द क्लैरिटी ऑफ विजन. क्लैरिटी ऑफ विजन, आपका जो आप जो भी देख रहे हो वहां पर क्लैरिटी कितनी है, दैट इज टर्म्ड एज द विजुअल एक्यूटी. सॉरी. The capacity of the eye to resolve detail is called visual acuity. दो definition है. The capacity of the eyes to resolve details is called visual acuity. सामने आपके डायग्राम है. डायग्राम को जरा अच्छे देखो. चलो हम लोग उसको थोड़ा से बड़े में देखते हैं. डायग्राम को अगर आप लोग देखेंगे, तो डायग्राम के अंदर द सेंटर पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर है, दैट इज जीरो कैरेक्टर या जीरो नंबर है. ओके. तो जीरो नंबर इज द फिक्सेशन पॉइंट. आई कॉल इट एज अ फिक्सेशन पॉइंट. द आई सेंसिटिविटी, आईज की सेंसिटिविटी इंक्रीजेस, eyes की sensitivity will get increased for those character which are closest to the fixation point. Okay, when you see this particular point, that is zero. Okay, as you can see. So जो आपके जीरो के आसपास में जो कैरेक्टर्स है या जो नंबर्स है, तो उनकी जो सेंसिटिविटी, हमारी आईज वहां पर सेंसिटिव हो जाएंगी, बिकॉज वहां पर बहुत सारे नंबर्स हैं. ठीक है. एंड वहीं पे उसने क्या बोला है, एंड डिक्रीजेस for those characters at the extreme edges of the circle. तो अगर आप एकदम एक्सट्रीम एजेस पर जाएंगे, तो वहां पर जाने के बाद में आपकी सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी. सेंसिटिविटी डिक्रीज क्यों होगी? सेंसिटिविटी डिक्रीज इसलिए होगी क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर लेस, नंबर ऑफ नंबर्स आर लेस. इसके लिए वहां पर जाकर हमारी सेंसिटिविटी कम हो गई, और जो फिक्सेशन पॉइंट, जो कि सेंटर पॉइंट है, वहां पर हमारी आईज की सेंसिटिविटी बढ़ गई. सो फोकस कहां पर ज्यादा है? फिक्सेशन पॉइंट के आसपास में ज्यादा है. ठीक है. तो इसको रिलेट इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि विजुअल एक्यूटी इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ह्यूमन that is required for a good design. Okay, if you are making any product, then you must have a good sensitivity of eyes, and your eyes should work in a good condition. और अच्छे से हर एक चीज को हम लोग क्या करें, जिसको हम लोग बोलते हैं विजुअल एक्यूटी अचीव होना चाहिए, यानी कि क्लैरिटी ऑफ विजन अचीव होना चाहिए. हर डिजाइनर का क्लैरिटी ऑफ विजन अच्छे से होना चाहिए, so that whatever it is looking, whatever he is looking, or at the product or at the model or at the whatever prototype we have, so उसका vision clear आना चाहिए. So that is the new term, that is visual acuity. Okay,
So this is the fourth one. We'll stop over here. What we have seen, the first characteristics is perception, second is memory, third is sensory storage, and the fourth one is visual acuity. Okay, remaining six will do tomorrow. Not tomorrow. We don't have any lecture tomorrow. We'll do it on Monday. Okay. So we have foveal and peripheral vision, then information. सब common है. ये सारी चीजें almost हर human being में होती ही है. But this is recommended that के ये सारी चीजें एक designer में होना चाहिए for making a design good and acceptable. Okay. So यहाँ पर आने के बाद में we'll stop now, okay, and then I'll stop the recording first.